जिसका पहला क्वेश्चन है गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब इसमें एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक अगर हमसे पूछ रहा है तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इन द सेंटर ऑफ मैच्योर ovule. In the center of the mature ovule is the exact location of embryo sac. Next question is, give the scientific term for the development of embryo from the egg without the process of fertilization. For this, the technical term is parthenogenesis. ये टर्म हो गया. इसका next, give the scientific term for development of more than one embryo in seeds. For this, the answer is polyembryony. Exact location of embryo sac. It is in the center of mature ovule. Give the scientific term for development of embryo from the egg without the process of fertilization. Answer is parthenogenesis. Give the scientific term for development of more than one embryo in seed. Answer is polyembryony. Is give few characteristics of insect pollinated flower. Number 1, we are writing the characteristic here. Number 1, characteristic of a insect pollinated flower is it must have sweet fragrance. Number 2, flower must be large, bright and showy, so that it can attract insects for pollination. Number 3, it must have nectar in it. Pollen grains sticky. So these are the points for or the characteristics for a insect pollinated flower. Next question is, what is the ploidy level of PEN? Ploidy level of PEN is 3N, that is triploid. Why PEN is triploid? Because it is formed by the triple fusion. Ploidy level is 3N as it is formed by the fusion of haploid nuclei, that is 2 polar nuclei and 1 male gamete. So total of 3 haploid. 3 haploid means 3N. So if it is asked that what is the ploidy level, then it is 3N, 2 haploids of polar nuclei and 1 of male gamete. Next question is, and explain the role of synergids in it. Now the structure of a megasporangium is the ovule. Is attached to the inner walls is with the help of a long slender stalk, and this stalk is known as funicle. So the long slender stalk with which the ovule is attached to the inner wall of the ovary. Here you can write ovule attached to the inner wall of ovary. This is the role of funicle. Now let's move to the diagram. Here, let me complete the stalk. This is the stalk. Now this type of structure is there. These are the layers of covering. Now this ovary here, 2 layers. It may be not so perfect as we draw with the pencil. Now inside this we will draw the structure of ovule with eggs, and these are the antipodals, 3. Then in the center is 2 polar nuclei. Here one is the synergid, egg cell, and then again the synergid. Center one is the egg cell. So this way, this is the structure of the mature ovule. Here this end is known as chalazal end, chalazal pole. The end from which the pollen grain will enter or pollen tube will enter is the micropylar end or micropyle. This opening, then here the central one is the egg cell. Let me select the other pen so that it would be easier for you to understand the labelings. Okay.
Now here the central one, this one is the polar nuclei. Polar nuclei. These are the antipodals. Antipodals. This end is the micropylar end. This end is the micropyle. This stalk is the funicle. These two, the layers, outer two layers which we have drawn, are the integuments, which is the covering. Integuments. This notch with which, from where it is attached, the seed is attached, it is xylem. Xylem. This is the labeling. एंडोस्पर्म फॉर्म होता है दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेटोफाइट के फ्यूजन से, इसलिए इसका जो प्लॉइडी लेवल है वो है 3n। कितने टाइप के एंडोस्पर्म्स हैं? पहला है न्यूक्लियर टाइप, दूसरा है सेलुलर टाइप, थर्ड है हमारा हिलोबियल टाइप। अब क्या डिफरेंस है इसमें? लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, न्यूक्लियर टाइप में जो सेल डिवीजन है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और इसमें साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन लेटर स्टेज में होता है। तो साइटोकाइनेसिस एट लेटर स्टेज। नेक्स्ट है टाइप है वो है सेल्यूलर टाइप। इस टाइप का डिवीजन में सारे डिविजन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के सारे डिविजन्स सेल वॉल फॉर्मेशन के साथ होते हैं, यानी ऑल द डिविजन्स ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस is followed by wall formation। थर्ड वन है हमारा हिलोबियल टाइप में जो न्यूक्लियस डिवीजन है, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय pn न्यूक्लियर डिवीजन is always followed by transverse wall formation। और वॉल फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे दो एंड क्रिएट होते हैं, शलाजन और माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पहला हो गया पार्थेनोकार्पी, जिसमें है डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट without pollination and fertilization। Next, what is autogamy? Autogamy is a type of self-pollination in which pollen grains are transferred from anther to stigma of same flower। So this is self-pollination. I am just repeating. Development of seedless fruit without pollination and fertilization is parthenocarpy. Autogamy is self-pollination in which pollen grains are transferred from anther to stigma of same flower। Next is ट्रिपल फ्यूजन। अभी हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में, जहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट का फ्यूजन होगा और इससे
क्योंकि तीन न्यूक्लियाई का फ्यूजन है इसलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं और इससे PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज डबल, हम लोग जो मेल गैमेट्स में देखते हैं एक पॉलन ट्यूब। इस पॉलन ट्यूब में दो मेल न्यूक्लियाई होते हैं, दो। पहला जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई। ये जो एग सेल के साथ फ्यूज किया ये हो गया फर्स्ट डिवीजन, पोलर न्यूक्लियाई के साथ सेकेंड डिवीजन। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टू डिविजन्स सो इट इज़ नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमीट हैं। एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज करता है, दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करता है। क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज विविपेरी। विविपेरी इज डेवलपमेंट germination of seed within the fruit when it is still attached to the parent. So germination of seed within the fruit when, or you can mention this, when it is still attached to the parent plant. That's all. Few important terms we have discussed today. Next, few more questions we will do in the next video.